Hello, my dear learners. Good morning to you all. I'm here with you once again with my first lecture in the series of English grammar. And today we are going to have some idea of tense. So, this is Brishpal Singh. I welcome you all on my YouTube channel, English with Chahar Sir. So, dear learners, आज हम स्टार्ट करते हैं सीरीज का पहला लेक्चर जिसमें ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं और इस टॉपिक का नाम है टेंस। टेंस, if we look at the origin of the word tense, then the tense, the word comes from Latin word testum, which means time. Okay, so tense, ये जो वर्ड है टेंस लैटिन वर्ड टेस्टम से लिया गया है. इट हैज बीन borrowed from testum, a Latin word, and the meaning of testum is time. Okay, तो टाइम और टेंस ये दोनों जो वर्ड्स हैं आपने कई बार सुने होंगे. दे आर वेरी familiar terms, but today I will try to make a distinction between these two terms. Normally, learners confuse and they take them similar or synonym to each other, but today I will try to make a distinction. So, if you take the first term, that is time. Okay, friend. सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि टाइम इज अ यूनिवर्सल टर्म. एक्चुअली दिस इज यूनिवर्सल. Okay. Second thing, time is non-linguistic. Non-linguistic. Linguistic means science of language. तो एक तो ये यूनिवर्सल टर्म है, दूसरा भाषा विज्ञान से इसका कोई संबंध नहीं होता. इट इज नॉन लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट एंड it has three parts or three dimensions. Okay, three parts we can say, three sections we can say, or three dimensions we can also say. These are the three parts and sections of time. Which are they? Number one is present. Number two is past. Okay, and number three is future. Okay, so these are the three divisions, three sections, and three parts of time, right? So if I represent it graphically, then you can take like this a horizontal line. एक horizontal line लिया अपन ने, ठीक है? And then we divide it like this. It's a slightly
like this and like this. This is actually moment of speaking. Moment of speaking, right? And moment of speaking is present. And the left side represents past and right side represents future. Okay. So now these are the three sections. Section number one, present. Section number two, past. And section number three. So these are the three sections of time, right? This is non-linguistic. It has nothing to do with language, right? It is universal term and it is also measurable that I will tell you later. But at the same time, when we look at tense. Now, what is tense? Tense actually uh, comes with a correspondence. Correspondence between the form of the verb, between the form of the verb and our concept of time. Our concept of time. This is how we can define a tense. If somebody asks you what is tense, then you can say that the tense is a kind of correspondence between the form of the verb and our concept of time. तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो अपन ये कह सकते हैं कि फॉर्म ऑफ वर्ब दैट टेल्स the time of action, tells the time of action. Okay, time of action that is verb. The form of the verb that tells the time of the action is called what? Tense. Okay, so now the initial concept is clear. In the beginning, time is a universal term, non-linguistic. Okay, it has three sections. तीन sections होते हैं इसके, present, past and future. And this is a graphical representation. Okay, the moment of speaking denotes present. Left side to this denote past and right side to it denote future. When we come to tense, the origin I have already told you. The testum जो Latin word है वहां से आया है tense, उसका मतलब होता है time. But still there is a difference between time and tense. क्योंकि अक्सर ये confusion हो जाता है कि time और tense एक ही है, but ऐसा नहीं है. Time denotes or is a kind of correspondence between the form of the verb and our concept of time. So simple language में अपन कह सकते हैं the form of verb that tells the time of action is called tense. I think it is clear. Now, for example, if we take form of the verb, okay, we take an example like play or like plays, okay, then we take the form played, okay, and the other forms are there. Total 5 forms are there. So play and plays, both verbs are used to denote present time. Okay? And played denotes past time. Right? So this is the form of the verb that tells us the time of the action, and that's why this is called tense. Is that clear?
Okay. So another term is also there, and let me tell you something more about tense. So after the definition of tense, now the first question comes to the mind is type of tenses. Type of tense. अभी तक ट्रेडिशनली हम पढ़ते आए हैं कि देयर आर थ्री टेंसेस, बट इन रियलिटी लिंग्विस्टिकली अगर देखा जाए तो वी हैव ओनली टू टेंसेस. वन इज प्रेजेंट टेंस एंड अनदर इज पास्ट टेंस. ठीक है, केवल दो टेंस होते हैं. अगर लिंग्विस्टिकली आप बात करो तो केवल दो टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस. देयर इज नो फ्यूचर टेंस. ऐसा कुछ होता नहीं है. क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए, फ्यूचर को आप डिनोट करते हैं. फ्यूचर इज डिनोटेड बाय यूजिंग विल और शैल. राइट? जब भी फ्यूचर टेंस की बात होती है तो आप ये हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं, ऑक्सिलरीज का यूज करते हैं, विल और शैल. और आपको ये पता होना चाहिए कि विल और शैल आर ऑल्सो द प्रेजेंट फॉर्म. ये भी प्रेजेंट फॉर्म है. ठीक है, और इनके अगर पास्ट फॉर्म बनाया जाता है, पास्ट फॉर्म विल और शैल का अगर बनाया जाता है, देन वी गेट वुड और शुड. राइट? तो बताइए फ्यूचर का कहाँ रहा? विल और शैल दैट इज प्रेजेंट एंड वुड और शुड दैट इज पास्ट. सो दैट इज देयर इज नो फ्यूचर टेंस एट ऑल. तो फ्यूचर टेंस यहाँ पर होता नहीं है, केवल ये दो टेंस होता है. फ्यूचर अपन ये कह सकते हैं कि ये एक मोड होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ मोड टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी. टू एक्सप्रेस probability to express possibility. Okay, so probability possibility को express करने के लिए एक kind of mode की तरह अपन इसको यूज करते हैं, but it is not included in tense. but traditionally फिर भी अगर ट्रेडिशनली पूछा जाता है तो आपको थ्री टेंस बता दें. एग्जाम्पल, थ्री टेंस, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तो इस तरीके से ये आपके टेंस का टाइप हो गया. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होता नहीं है क्योंकि फ्यूचर को डिनोट किया जाता है विल और शैल से. विल एंड शैल आर आल्सो द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टाइम. ठीक है, तो ऐसे ही पास करते हैं तो इनका कोड और शुरू हो जाता है. अब टेंस के साथ देखो, टाइम और टेंस टू टर्म्स हो चुकी हैं. इसी के साथ एक नई टर्म आती है जो बहुत कम लर्नर ने सुना होगा इसको, दैट इज कॉल्ड आस्पेक्ट. ओके, टाइम, टेंस और आस्पेक्ट. आस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू द मैनर. इट इज रिलेटेड टू द मैनर. manner in which the verbal action is experienced. The verbal action is experienced. Okay, in two ways mostly. One is as completed and another is progress. That is progress. Okay, progress. तो आस्पेक्ट का मतलब हो गया कि जैसे कोई भी एक्शन है, उस एक्शन को आप किसी भी सेंटेंस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसका जो मैनर है, होने का जो तरीका है, वो कैसा है. दो तरीके हो सकते हैं. या तो आपका एक्शन कंप्लीट हो चुका है या आपका एक्शन इज स्टिल इन प्रोग्रेस, वो अभी भी प्रोग्रेस में है. फॉर एग्जाम्पल,
अगर हम ये कहते हैं कि सी हैज finished she has finished her book, ओके। और एक अपन ये कहते हैं कि सी इज राइटिंग राइटिंग अ लेटर। तो आप देख सकते हो हियर द एक्शन इज कंप्लीटेड, यहाँ कंप्लीट हो चुका है एक्शन, बट हियर द एक्शन इज स्टिल इन प्रोग्रेस, यहाँ पर अभी भी एक्शन आपका चल रहा है। तो इसीलिए ये आपका परफेक्ट एस्पेक्ट हो गया और ये आपका प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट हो गया। तो किसी भी एक्शन के वर्ब के टू एस्पेक्ट होते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। समटाइम्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस द क्वेश्चंस रिलेटेड टू एस्पेक्ट इज आल्सो आस्क्ड। फॉर एग्जांपल अगर ये सेंटेंस दे दिया और पूछ लिया कि ये वर्ब है वो किस एस्पेक्ट को डिनोट करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हेन एक्शन इज फिनिश्ड, okay, completed, then perfect, and the action is in continuity or that is in progress, then it is progressive aspect। ठीक है, तो ये aspect को भी आपको ध्यान रखना है। And the third concept which is also less observed and studied is mood। ये मूड जो कॉन्सेप्ट है इसको भी थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है। ये आपका जो भी वर्बल एक्शन है, ओके, उसके फीचर्स को डिनोट करता है। फीचर्स इन द सेंस कि क्या उसके अंदर सर्टेनिटी है, क्या उसके अंदर ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, क्या उसके अंदर नेसेसिटी है, ओके, नेसेसिटी है, या मान लीजिए उसके अंदर पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके की जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को जब एक्सप्रेस किया जाता है तो उन कंडीशंस को अपन क्या कहते हैं, मूड कहा जाता है। ओके, सो नाउ 4 concepts are clear, let me revise once more। First concept is time, okay, then we come to tense, okay, then we come to aspect, okay, and then we come to mood, okay। So I will also tell you in detail about tense, aspect, and mood in my subsequent videos, next videos। But here आपको अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट के तौर पर ये ध्यान रखना है कि टाइम ये एक आपका नॉन लिंग्विस्टिक टर्म है, टेंस ये आपका लिंग्विस्टिक टर्म है, लेकिन ये फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है दैट डिनोट्स द एक्शन ऑफ द टाइम ऑफ द एक्शन। ठीक है, आस्पेक्ट आपका मैनर बताता है, हाउ द एक्शन इज टेकन प्लेस और हाउ द एक्शन इज परफॉर्मिंग। और उसमें 2 तरीके हो सकते हैं, ईदर द एक्शन इज कंप्लीटेड और द एक्शन इज प्रोग्रेसिव। और मूड हमारे वर्बल एक्शन की कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को एक्सप्रेस करता है, जिनमें अपन कुछ सेंस एक्सप्रेस करते हैं, लाइक सर्टेनिटी, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, etc. So you should keep these introductory terms in your mind, time, tense, aspect and mood। और ये जो तीनों टर्म्स हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और ये आप इनको जैसे अगर प्रेजेंट और पास्ट को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसको एस्पेक्ट से आप अलग नहीं कर सकते, और अगर फ्यूचर को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसको आप मूड से अलग नहीं कर सकते। तो आई शुड से दैट प्रेजेंट और पास्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद एस्पेक्ट, ठीक है। और अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर इज क्लोजली रिलेटेड टू मूड। तो आपको जब तक मूड की जानकारी नहीं है तो फ्यूचर का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते, और एस्पेक्ट की जानकारी नहीं है तो आप उसको प्रेजेंट और पास्ट को सही इस्तेमाल कर सकते हो। दैट मीन्स एस्पेक्ट इज रिलेटेड टू प्रेजेंट एंड पास्ट and mood is related to future। So these are the introductory terms
and I hope you must have learned and you must have understood them. और आप और अभी अपन जब आगे बढ़ेंगे तो और डिटेल में इनको अपन आगे पढ़ाएंगे। तो आज पहला वीडियो है इस सीरीज का। अगला जो वीडियो आएगा उसमें अब हम टेंस को कंटिन्यू करेंगे और आगे इसके बारे में और जानकारी आपको दी जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स तक ये नॉलेज पहुंचे और उन्हें प्राप्त करें। और आप अगर कॉन्स्टेंटली मेरे वीडियोस देखते रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश की तरफ से बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ओके, इट्स माय प्रॉमिस। So thank you. Goodbye. Take care. See you in the next video. Till then, take care.